Hello my dear students, welcome back in AS Academy Digital classes, and today we are going to learn about the file handling in Python. So we will learn today about the binary file, what is the binary file, how to do the open and close of the binary file. You will also learn about what is the file modes, what do mean by the pickling and unpickling with the binary file, and at last I'm going to discuss about the pickle module in a today video. So let's move on our topic and let's see what is the today's topic. Today's topic, I already told you, binary file, opening and closing. These all things we are going to learn today. So first you have to understand what is the binary file. Binary file that stores the information in the form of the stream of bytes. A stream of bytes means collection of bytes, sequence of bytes you can say. So sequence of bytes is called a stream of bytes. Okay. A binary file contains information in the same format in which the information is held in memory. That is, without translation or encoding is stored in the binary file. There is no delimiter for a line in a binary file as it is stored in a text and CSV file. So delimiter is just like a separator, and that is used for the terminate at the end of the line. It's a EOL, end of line representation. Binary files are faster and easier for a program to read and write than a text file. सो बच्चों में आपको ये जानना है कि बाइनरी फाइल देखो इन्फॉर्मेशंस को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में स्टोर करता है, पहली बात जो है। और दूसरी बात ये है कि बाइनरी फाइल इन्फॉर्मेशंस को उसी फॉर्मेट में स्टोर करेगा जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। और क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में जिस फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा है दैट इज द बाइनरी। नॉर्मली हमें पता होता है कि दिस इज द मशीन लैंग्वेज, तो वो जो मशीन लैंग्वेज है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन को यहाँ बाइनरी फाइल में भी स्टोर किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस बाइनरी फाइल इज faster and easier. Okay. Second thing, अच्छा क्या है, मतलब कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, जबकि टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल में इसे ट्रांसलेशन करनी होती है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन को अस्काई कोड में रखना होता है, मींस इट्स अ सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना होता है, सो दैट इट्स अ रीडेबल और इसको कहीं से भी रीड किया जा सकता है, इसलिए इसको स्काई फॉर्मेट में रखा जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेट और सीएसवी में। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, बाइनरी फाइल में किसी तरह का कोई ट्रांसलेशन नहीं है और उसी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है जिस फॉर्मेट में ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की मेमोरी में होता है। सेकंड थिंग, आपको एक चीज और भी जानना है, क्योंकि बाइनरी फाइल में कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है तो ईओएल के लिए मतलब एंड ऑफ लाइन के लिए यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, अलग से कोई स्लैश एन और ऐसा कोई सिंबल लगाया नहीं जाता है यहाँ पे, तो कोई डेलिमिनेटर यूज नहीं होता है एंड ऑफ लाइन पे लिए। ठीक है, द टेक्स्ट फाइल कैन ओपन इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, while binary files are not in a human readable file form, means you are not able to your binary file directly in the notepad. If you are going to open in a notepad, you are not able to read it because it will show the information in a machine code. So that is the points you have to remember always, because अगर आप टेक्स्ट फाइल को खोलोगे किसी एडिटर में तो वो रीडेबल फॉर्मेट में होता है, लेकिन बाइनरी फाइल ऐसा नहीं होता है। द बाइनरी फाइल कैन हैव एनी नॉन टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन, .txt छोड़ के आप कोई भी एक्सटेंशन बाइनरी फाइल को दे दीजिए, वो उस फाइल में आप उससे सेव कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। So next we are going to learn about how to open a binary file. देखो, just like a text file or CSV file, binary file can also be opened with open method and with open method. देखो, दो तरह के स्टेटमेंट है, there is a one open method and second is the with open method statement. Open method के केस में क्या होगा, simply you have to call the open function, provide the name of the file by which you want to create, and second is the mode of the file. That I will discuss you what is the meaning of the mode. And whenever you call this open method, it will return a reference of the file. It try to open the file, load the file inside the memory, and their reference will be given to this file handle object. So what is the file handle? This object will help you to access the file. This with the help of this you are able to read and write inside the file. So that is the importance of the file handling. Second thing is the with open statement. This is another statement through which you can also do this, but look at there is something difference between the syntax. Here you have to write the open, with open, then the file name, then the mode inside the parenthesis as file handle. The same statement is there. Here I am also using the file handle, here I am also using file handle, but the writing style is the different here. And this is the file manipulation statements you have to write. Every statements you have to write inside the block of this with the statement. तो जैसा कि आपको बता दिया मैंने कि दो तरह से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, ओपन मेथड से एंड विद ओपन मेथड से। ओके, दूसरा है कि फाइल को क्लोज कैसे कीजिएगा, हाउ टू क्लोज। क्लोजिंग के लिए यू हैव टू कॉल अ क्लोज फंक्शन
You have to call a close function. That method is used to close the binary file. Simply you have to call the close function with the help of the file handle object, file handle dot close, and it will going to close the file. एक चीज ध्यान रखना है कि what is the difference between a open function and with open function. There is a something difference, and you can say there is some advantage if you are going to use you're going to open your file with the help of the with open function statement. So what the advantage is this? The advantage is that with open statement always close the file automatically in any situation. अगर किसी तरह का कोई कंडीशन है, कोई सिचुएशन है, इट्स देयर एनी एक्सेप्शन इज देयर, एनी एरर इज देयर, तो एट द एंड ऑफ द ब्लॉक वो क्या करेगा, फाइल को क्लोज करेगा ही करेगा. मतलब ब्लॉक से अगर आप बाहर निकल रहे हैं, इसके ब्लॉक से अगर आप बाहर निकल रहे हो तो वो फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा. बट दिस वाज नॉट हैपन विद द इन केस ऑफ द ओपन फंक्शन. अगर आपने ओपन फंक्शन को यूज किया है तो दिस इज योर मोरल ड्यूटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली. मतलब आपको एक्सप्लिसिटली फाइल को क्लोज करना होगा. मीन्स यू हैव टू call the close function. In this way you have to close your file. Okay, so now move on the next, and this is the binary file mode. What do you mean by the file mode? देखिए, whenever you are trying to open the file, you have to mention the mode of the file. Mode of the file actually decide for what purpose you are going to open the file. So here also, just like a text file, in a text file we are writing only R, W, A, something like this. But in a binary file we have to include a B character with the file modes to open a file in a binary mode. Okay, so what is this? Like this, RB, read binary, RB plus, read binary plus, R plus B means read binary plus. This is the same way, either you use in this way or you can use in this way. What is the purpose of RB and RB plus and R plus? This open a file for the reading. File must be open, otherwise an exception raised. R plus B or RB plus means reading and writing both operation can be possible. देखिए, अगर आप सिर्फ R मोड से फाइल को ओपन करेंगे तो you are able to do the reading operation. But if you open the file with the R plus B or RB plus, so it means you will open the file for the reading and writing both purpose. Second thing you have to remember, B is the must be there because you are going to open the binary file. अगर आप B include नहीं करते हो then it will becomes the text file. तो अब आपको समझ में आ गया कि what is the importance of the file mode. File mode is only who is decide that this file is open for which purpose, first thing, and second thing, this is a text file or binary file. So you must have to mention. If you are not mentioning this, then it always going to, if you are not writing the B there, then it is always going to open the file in a text mode. Text file is there. So here is the WB and WB plus and W plus B. So it's open the file for the writing purpose. If the file does not exist, it's always try to create a file. If file is existing there, then it will override without giving the any warning message to you. W plus B and W plus and WB plus means you will open your file for the writing and reading both of purpose. So both operation is possible here. WB for the writing only. So you remember this here again. Here B is referred to the binary. Now the appending mode. If you want to open your file for the appending purpose, you have to use AB, AB plus and A plus B. Appending means you don't want to create new file if the file is already existing. If the file does not exist, then in that case it will create a new file. But if the file is exist, in this case it will open the file for the adding records and it will keep the records, the older records also there. But what happen in case of the write mode, WB mode? If you open the file and that file is already existing, it is going to delete the all older contents there. Means पुराने सारे content delete हो जाएंगे and ये नए content को उसमें write करेगा. So then create and open the file. It will open the file for the append purpose. And what is the meaning of A plus here? What is the meaning of plus? Plus means you can do the writing as well as reading both together. Okay, so this is AB for writing only. Okay, now let's see some examples how you will do the open command, how will execute for the open command. So look, I have opened a file. The file name is employee.dat and I'm writing here WB. It means I am opening the file for the writing purpose, and this is the binary file. And what here I have written the file handle object. So whichever the file is open, their link will be given to this object. Second thing is there, the open method, and now I'm opening the file for the reading purpose. This is the reading purpose here. Now I'm opening the file for the appending purpose. This is appending purpose, and all files are the binary file. If you want to close your file, simply you have to call the close. This is the closing file. So this way you can close your file.
Okay, next is the working with the binary files. Now this is the important, the previous concept is the this basic concept about the file, binary file, what is the binary file, how you open the binary file, how to close the binary file. But in case of the Python, if you want to work with your binary file, you require something more extra here. What is the extra here? You have to understand how to do the work with the binary file. You remember this? Whenever you are going to work with the binary file, this is called pickling and unpickling. What is the meaning of pickling? Pickling is called serialization and unpickling is called deserialization. Now understand the pickling. What is serialization? Serialization is the process of converting the Python object into a byte stream so that it can be written in a binary file. मतलब this is the process through which you can convert the Python object like tuple, list, dictionary, whatever their hierarchy, whatever their structure. मतलब hierarchy means they are storing a structure of different data structure. तो it is try to convert इस सारे tuple, list, dictionary को जिस फॉर्म में आप डेटा स्टोर कर रहे हो, in this all data is try to convert into the byte stream. उसे byte stream में convert करता है and so that you are able to write in a file. ठीक है, इस लाइक बनाता है कि आप फाइल में लिख सकते हो. तो this is called pickling. अब unpickling का मतलब क्या होता है कि सपोज यू हैव क्रिएटेड द फाइल एंड नाउ यू वांट टू रीड इट. तो क्योंकि आपने जब पिकलिंग किया था तो एक पाइथन ऑब्जेक्ट को आपने स्ट्रीम बाइट में कन्वर्ट किया था, तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ गया. नाउ यू हैव टू डू द रिवर्स प्रोसेस. उस बाइट स्ट्रीम को आपको क्या करना होगा, उस पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनपिकलिंग हियर. सो अनपिकलिंग इज अंडरस्टैंड द deserialization is the inverse process of pickling, that is it converts byte stream into the object hierarchy. It means it produces the exact replica of original object. जो भी ऑब्जेक्ट आपने, जैसे आपने एक लिस्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया तो जो इन्फॉर्मेशन तैयार हुआ होगा, सपोज करते हैं कि दिस इज द माई एक लिस्ट ऑब्जेक्ट, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, इसको हमने पिकल किया, इसने क्या किया, इसको एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब सर्कुलर शेप में ये फाइल के अंदर में राइट हो गया. जस्ट एज्यूम दैट कि ये एक रेक्टेंगल को हमने सर्कुलर में कन्वर्ट कर दिया. अब इसको वापस हमें, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड पिकलिंग, दिस इज कॉल्ड पिकलिंग. अब वापस हमें इसको रेक्टेंगल में लाना होगा अगर हम आउटपुट दिखाना चाहते हैं, रीड करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसे अनपिकल करना होगा. अनपिकल करके वापस इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना होगा. तो इसी को क्या कहा जाता है, अनपिकलिंग कहा जाता है, डीसीरियलाइजेशन कहा जाता है और ये सीरियलाइजेशन होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, सो नाउ हाउ विल डू दिस पिकलिंग एंड अनपिकलिंग. इसके लिए आपके पास एक पिकल मॉड्यूल है जो आपके पाइथन के अंदर आपको मिल जाएंगे. तो इस पिकल मॉड्यूल को आपको यूज करना होता है. पाइथन प्रोवाइड्स अ पिकल मॉड्यूल टू परफॉर्म पिकलिंग एंड अनपिकलिंग प्रोसेस विद द बाइनरी फाइल. दिस मॉड्यूल प्रोवाइड द मेथड्स टू परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशन विद द बाइनरी फाइल. टू वर्क विद द पिकल मॉड्यूल you need to be import, so you don't forget to import it. So this is about the basic concept of binary file, how to open the binary file, how to close the binary file, what is the meaning of the pickling and non-pickling, as well as I discuss about the pickle module. So in the next video I'm going to discuss about something about how to write into the binary file, how to do the dump process and something like this. So wait for my next video. I hope you understand, and if you understand this, don't forget to like my video. और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.